Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. The you can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, what we will study today, now we are going to continue with today's topic, that is networking fundamentals.
So in last lecture हम लोगों ने देखा the introduction about it, then what is a network, we have seen again some points, that is types of network, then types of network based on component roles. उसके बाद हम लोगों ने देखा what is internet and what are the different components of the internet, that is internet and its components. उसके बाद हम लोगों ने देखा what is www, that is world wide web. So the now point which we are studying now, that is internet terminologies. ठीक है. सो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब ब्राउजर एंड वेब क्लाइंट. So now we will continue with the next internet terminology point, that is what is URL, then blog, blogger, blogging, news group, email and email addresses. So the point now we will discuss about it is, it is eighth one is URL. देखिए URL का लॉन्ग फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज नथिंग बट द URL. देखिए URL क्या होता है, इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन इंटरनेट. URL is uniform resource locator. It is the unique address of a web page on internet. हर एक वेब पेज का अपना खुद का यूनिक एड्रेस होता है और URL क्या करता है, वो आपको लोकेट करके देता है. बिकॉज एक वेब पेज का एक एड्रेस दूसरा वेब पेज जो है वो यूज नहीं कर सकता है. जैसे कि एक पर्सन का एक एड्रेस होता है, लाइक वाइज वन फैमिली इज हैविंग वन एड्रेस and another is not having that, likewise. So you are having your own unique address. So likewise the uniform resource locator is there. The question can be asked in exam, what is URL, or for the MCQ, so what is the long form of URL, that is uniform resource locator. Now next one, the next concept we are going to study is blog. So what is the blog, now we are going to see. So blog is firstly short for web blog. So a blog is a web page that serves as a publicly accessible personal journal for an individual. So blog is a web page that serves as a publicly accessible personal journal for an individual. So a blog is a frequently updated online personal journal or डायरी. सो देखिए ब्लॉग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्सनली एक्सेसिबल जर्नल, पब्लिकली एक्सेसिबल एक पर्सनल जर्नल होता है एक इंडिविजुअल के लिए, और ब्लॉग फ्रिक्वेंटली अपडेट किया जा सकता है बाय यूजिंग वंस ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी. जैसे कि हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में ब्लॉग्स आते हैं बहुत सारे अदर्स के, वैसे ही ऑनलाइन ब्लॉग्स जो होते हैं वो हम लोग देख सकते हो. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द वेब ब्लॉग्स. देन नेक्स्ट वन इज द blogger. So what is the blogger? The author of the blog is called blogger. ब्लॉग के ऑथर को जो हम लोग कहते हैं उसको ब्लॉगर कहा जाता है. So a blogger is the one who regularly writes and updates
entries in his or her blog. ठीक है, the author of a blog is called a blogger. ठीक है, blogger is the one who regularly writes and updates entries in his or her blog. जो क्या करते हैं, खुद के वो एंट्रीज जो है वो रेगुलरली राइट एंड अपडेट करता है. दैट इज नथिंग बट द ब्लॉगर. Then next one is the blogging. The action of writing blog is called blogging. So ब्लॉग लिखने की जो एक्शन होती है उसके हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द न्यूज ग्रुप. न्यूज ग्रुप क्या होता है देखते हैं हम. न्यूज ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन forums where groups of users with common interests gather to discuss on a common topic of interests. ठीक है, न्यूज ग्रुप देखिए क्या होता है. द न्यूज ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन forums where groups of users with common interests gather to discuss on a common topic of interest. अगर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी का, एक टॉपिक पर, सो group of people come together, that is group of users come together with some common interest, or they are going to gather and discuss on a common topic of interest. That are nothing but the news groups. Then next one is the email. So email is nothing but the short for electronic mail. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. So the email refers to messages which are distributed by electronic means from one computer users to one or more recipients via a network which is mostly the internet. देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ये क्या होता है, ईमेल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है. ईमेल का जो लॉन्ग फॉर्म है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मेल है. एंड ईमेल रेफर्स टू द मैसेजेस व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रिसिपेंट्स. दैट इज वन और मोर कंप्यूटर यूजर्स. दैट इज एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. जो के बीच में जो मैसेज जाता है उसको हम लोग ईमेल कहते हैं. एंड वाया नेटवर्क एंड मोस्टली ऑन द इंटरनेट ईमेल जो है वो पास होता है. दैट इज मैसेज इज गोइंग टू बी स्प्लिट. देन नेक्स्ट वन इज द email address. Every email has a unique electronic post office box. We can call it as the post office box with a unique address on a network where email can be sent. So
this unique address is known as email address. ठीक है, एक हर एक ईमेल को खुद का एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, उसके लिए क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंड। ऑन अ नेटवर्क वहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ईमेल सेंड कर सकते हैं। एंड दिस यूनिक एड्रेस इज नथिंग बट व्हाट, नोन एज द ईमेल एड्रेस। अब यहां पर देखिए, ईच ईमेल एड्रेस each email address has 3 sections. Let's see one example. ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, माई नेम @gmail.com। देखिए अभी यहाँ पर ये पूरा ईमेल एड्रेस जो है, मैंने एक इमेजिनरी ईमेल एड्रेस दिया है। अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो देखिए ईमेल एड्रेस किससे बनता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है वो माई नेम इज व्हाट, यूजर नेम। माई नेम मतलब क्या है, ये यूजर का नाम है, दैट इज यूजर नेम। देन @ okay, it is going to specify at which address, it's nothing but the address at the rate. And lastly gmail means host or domain name। ठीक है, सो ऐसे जो होता है ईमेल एड्रेस होता है। अगर एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, student 123 @yahoo.co.in। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो है वो है यूजर नेम, then next one is the @ and whatever written is here yahoo.co.in, host or domain name। ठीक है, सो ये जो होता है ईमेल एड्रेस होता है एंड इट इज हैविंग दी 3 सेक्शंस लाइक यूजर नेम @host और डोमेन नेम। ठीक है, सो ऐसे जो होते हैं ईमेल एड्रेसेस को सेक्शंस होते हैं। So I hope you understood about the internet terminologies. So the next point which we are going to discuss is internet connectivity options. Internet की connectivity कैसे करते हैं and what are the different internet connectivity options. Now we are going to see this one by one. So there are mainly three ways to connect to the internet. So first through the dial-up connection, second through the broadband connection, and the third one is the wireless connection. So पहली जो है देखिए क्या है, थ्रू डायल अप कनेक्शन। इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे करनी है, हम लोगों ने अभी तक इंटरनेट देखा क्या है, बट हाउ टू डू द कनेक्टिविटी बिटवीन द इंटरनेट। सो a dial-up connection is a temporary connection and it is set up between your computer and ISP server. So what is an ISP? देखिए ISP is nothing but the an internet service provider. So it's a company that provides access to the internet. So dial-up connection देखिए वो कैसे होता है, एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है एंड इट इज सेट अप बिटवीन दी योर कंप्यूटर एंड ISP, इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर। सो ये क्या करता है, एक कंपनी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वो क्या करता है, आपको इंटरनेट का एक्सेस देता है। सो अ डायल-अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड using a modem which uses the telephone line to dial up the number of the ISP server.
और डायल अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड यूजिंग अ मॉडेम, एक मॉडेम यूज किया जाता है एंड विच यूजेस द टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन यूज करता है टू डायल अप द नंबर यूजिंग द ISP server. So a dial-up connection makes the internet available to you as long as you remain connected. जब तक आपका इंटरनेट जो कब तक चालू रहेगा डायल-अप कनेक्शन का, unless and until you are connected to the that particular dial-up network. As soon as you disconnect your computer from ISP server, that is internet service provider server, the internet is also not available to you anymore. सो टू यूज योर इंटरनेट अगेन, आपको दोबारा वापस आपको इंटरनेट आपका यूज करना है, देन यू हैव टू रिकनेक्ट यूजिंग द डायल अप कनेक्शन. दैट इज नथिंग बट द योर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन, दैट इज डायल अप कनेक्शन. सो पुराने व्हेनेवर द इंटरनेट वाज देयर, फर्स्ट द मोस्टली टेलीफोन के लिए जो लीज लाइन होती थी, वो लीज लाइन का यूज कर डायल अप कनेक्शन जो थे वो इस्टेब्लिश हुआ करते थे. Then next one is through the broadband connection. So the term broadband is short for broad bandwidth. That is nothing but the broadband with connection. That's why its short form is broadband. That is broad and bandwidth. So bandwidth जो है, what bandwidth does? So bandwidth refers to the amount of data that a signal or circuit can carry. एक अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डेटा होता है जो सिग्नल और आपका सर्किट जो है वो कैरी कर सकता है. सो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस आर फास्टर देन डायल अप कनेक्शंस. ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द डायल अप है, दैट इज दे आर फास्टर देन द डायल अप कनेक्शंस बिकॉज देयर सिग्नल्स कैन कैरी much more data into your home and onto your computer than the conventional phone lines. So broadband connection speeds are measured into the Mbps, which stands for megabits per second. So the most residential broadband internet connections provide connection speeds which are varying from 256 kbps, that is kilobits per second, to 8 mbps, that is 8 megabits per second. So dial-up uses the regular phone lines to connect, obviously, whereas broadband uses a variety of other means. Dial-up क्या करता है, आपके रेगुलर फोन लाइन यूज करता है कनेक्टिविटी के लिए, but not it is in the case of the broadband connections. So broadband services are available in mainly 3 platforms. First one is cable modem, then second one is the DSL, that is digital subscriber line, and third one is the satellite. ठीक है, हम लोग एक के बाद एक देखते हैं. So what is first one, that is cable modem. क्या होता है, देखिए, the cable modem uses the same connection that delivers your cable TV, though you don't need to be a cable TV subscriber to get a cable broadband internet connection. So this platform is fast and reliable but not available in all areas. That is nothing but the cable modem. यह क्या करता है, आपके केबल टीवी के लिए जो वायर यूज की जाती है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सेम केबल टीवी की वायर जो है वो यूज करते हैं. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, यूजिंग द केबल टीवी. देन नेक्स्ट वन इज द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दैट इज DSL. सो यहाँ पर देखिए DSL क्या करता है. The DSL, this platform uses your existing phone line but doesn't tie up the line for voice calls. देखिए डायल अप में क्या कर सकते हो आप, फोन कॉलिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों कर सकते हैं, पर ब्रॉडबैंड में अगर आप लोग DSL, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो लोगे तो क्या करता है, इट डजंट टाई अप फॉर द लाइन फॉर वॉइस कॉल. तो आप लोग DSL के लिए सेम फोन कॉल की लाइन यूज कर सकते हो, बट वहाँ उस लाइन को आप लोग फोन कॉल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. दैट विल बी, इट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू द इंटरनेट इटसेल्फ. So on the downside, DSL requires expensive installations. Its main disadvantage, and your distance from the provider impacts its speed. अगर आपका डिस्टेंस, आपका जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे बहुत ही ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड को जो है वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. जितना आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके एरिया में होगा
उतना आपको अच्छी स्पीड जो है वो डीएसएल देगी, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देन थर्ड वन ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज सैटेलाइट। ठीक है, चलिए सैटेलाइट क्या होती है देखते हैं। सो सैटेलाइट, दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल वेयर केबल एंड डीएसएल आर, जहां पर केबल टीवी के जो लाइन होती है वो नहीं रहती एंड डीएसएल दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन नहीं होती है। सो उन दोनों के लिए और थर्ड ऑप्शन जो है वो है सैटेलाइट। सो एज लॉन्ग एज यू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ साउथर्न स्काई यू कैन गेट दिस सर्विस। आपके पास अगर क्लियर व्यू होगा स्काई का तो ये ऑब्वियसली यू कैन गेट दिस सर्विस। हाउएवर सैटेलाइट इज स्लोअर देन बोथ केबल एंड डीएसएल। केबल एंड डीएसएल से ऑब्वियसली स्लो रहती हैं सैटेलाइट्स एंड कैन बी इंटरप्टेड बाय द बैड वेदर, इट्स मोस्ट डिसएडवांटेज। थोड़े बादल आ गए तो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी जा सकती है एंड इट रिक्वायर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ सैटेलाइट डिश ऑन योर हाउस और इन योर यार्ड। सो इसके लिए क्या लगता है, आपके घर में या फिर आपके आंगन में उसका सैटेलाइट डिश जो है आपको बिठानी पड़ती है। सो दिस इज नथिंग बट दी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, विच इज नथिंग बट दी शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्रॉड एंड बैंडविड्थ। सो यहाँ पर तीन टाइप से आप यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग द केबल टीवी, देन बाय यूजिंग द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड थर्डली बाय यूजिंग द सैटेलाइट कनेक्शंस। सो फ्रेंड्स, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे दैट इज हाउ टू वायरलेस कनेक्टिविटी इज गोइंग टू बी डन थ्रू दी वायरलेस कनेक्शंस. So the book which I have referred for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora for class 10, course 402 under NSQ. So let us start with today's quiz session. So let's get started with that. So friends, let us start with today's quiz session. So you will be having total 20 questions and each question will be having 1 minute. So let's get started with that. So here is question number 1. What is long form of LAN? Options are A. Local area network, B. Local allocated network, C. Light area network and D. Locally allocated network. Your time starts now. So the correct option is A. Local area network is the long form of LAN. The next question number 2 is here on your screen. What is long form of MAN? M-A-N. Options are A. Metropolitan area network, B. Major allocated network, C. Multiple area network and mainly allocated network. Your time starts now.
Time up. So correct answer is A. Metropolitan Area Network is the long form of MAN. So the next question is here on your screen. What is long form of WAN? Your options are A. Wide area network, B. Wide allocated network, C. Wide area network, and D. Widely allocated network. So your time starts now. Time up. So correct option is C. Wide area network is the long form of WAN. So the question number 4 is here on your screen. Which of the following is not an example of instant messaging? Your options are A. Google Talk, B. Google Hangouts, C. WordPress, and D. Facebook Messenger. So your time starts now. Time up. So correct answer is C. WordPress is not an example of instant message. Google Talk, Google Hangouts और Facebook Messenger जो ये सारे instant messaging के examples हैं. Then the question number 5 is here on your screen. Which is used for sending text messages online? Your options are A. Instant messaging, B. Email, C. Website, and D. Blog. Your time starts now. So the correct option is instant messaging is used for sending text messages online. Correct option is A. Instant message. The question number 6 is here on your screen. We can do chatting on an IM client. True or false? Your time starts now.
Yes, it is obviously true that we can do chatting on an instant messaging client. So correct option is A, true. So we will move towards the question number 7. Networks are useful because A, no one copy your files. B, you only need one printer per network. C, the computer use less electricity. And D, each user of the network can access files more easily. So your time starts now. So correct answer is D. Each user of the network can access files more easily. That's why networks are useful. Then question number 8 is here on your screen. Internet may be termed as an example of options are A, LAN, B, MAN, C, WAN, and D, all of these. So your time starts now. Yes, internet may be termed as an example of LAN, MAN, and WAN. So correct option is D. All of the above can be considered as the example of internet. Then the question number 9 is here on your screen. The act of writing a post for a blog is called A, blogger, B, blog, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now. So the correct answer is C, blogging. Yes, act of writing post for a blog is called as the blogging. So the question number 10 is here on your screen.
A person who writes a blog is called A. Blog, B. Blogger, C. Blogging, and D. Blogosphere. So your time starts now. A person who writes a blog is called as the blogger. So correct option is B. Blogger. Question number 11 is here on your screen. Out of the following, which is not the blogging site? A. My blog, B. Blogger, C. WordPress, and D. Live Journal. So your time starts now. So time up. Correct answer is A. My blog is not a blogging site. So question number 12 is here on your screen. Which of the following are Government of India's startup initiatives? Your options are A. Startup India, B. Make in India, C. Both A and B and D, none of the above. So your time starts now. So the correct option is both A and B. Yes, Startup India and Making India. Both are the Government of India's startup initiatives. So the question number 13 is here on your screen. Successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So options are A true, B false. Your time starts now.
So yes, it is true that the successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So correct option is A, true. Now we will move towards the question number 14. Entrepreneurship degrades the standard of living. True or false? So your time starts now. Time up. It is obviously not true that entrepreneurship degrades the standards of living. So correct answer is B, false. So let us move towards the question number 15. Which of the following is not developed by entrepreneurships? A, society, B, economy, C, nation, and D, none of the above. So your time starts now. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सोसाइटी, इकोनॉमी और नेशन तीनों को भी डेवलप करता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप? सो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव. So the question number 16 is here on your screen. Which of the following is an example of online transaction? A, e-shopping, B, e-ticketing, C, both A and B, and D, none of the above. Your time starts now. So both e-shopping and e-ticketing are options of examples of the online transaction. So correct answer is C. Both A and B are the example of online transactions. So we will move towards the question number 17.
For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with A FTP, B HTTP, C HTTPS, and D any of these. So your time starts now. So time up. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with HTTPS, that is Secure Hypertext Transfer Protocol. तो देखिए पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सो उसकी सिक्योरिटी जरूरी होती है, सो दैट्स वाई सिक्योर HTTP यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. The question number 18 is here on your screen. Which of the following OS does not come under Linux OS? That is A BSD, B Red Hat, C Ubuntu, and D CentOS. So your time starts now. So BSD is the OS, that is operating system, which does not come under Linux OS. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए रेड हैट उबंटू एंड सेंटोस जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं, whereas BSD does not come under. So correct option is A BSD. So the question number 19 is here on your screen. How many sustainable development goals target are there? Options are A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 169 sustainable development goals targets are there. So the last question number 20 is here on your screen.
How many sustainable development goals are there? A 48, B 169, C 15 and D 17. So your time starts now. So there are total 17 sustainable development goals. So correct option is D 17. That is one set. So that's all for today's session, friends. So the next feature for the plus and iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for plus and iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's get it. So friends, Unacademy is freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is the exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer. Now let me tell you about the offer for plus and iconic subscription from Unacademy. The key offer it is going to end on 23rd of August 2021, that is on Monday. देखिए this is exciting mega offers for CBSE classes from class 6 to class 12th. So offer देखिए कैसे रहेंगे. If you are having the subscription CBSE subscription, then plus subscription or iconic, that is for 12, 15 and 18 months, then you can get free CBSE subscription for 2 months. If you are having this subscription for 24, 36 and 48 months for plus or iconic, then you can have the free CBSE subscription for 4 months. And if you are having the subscription of the iconic or plus, that is for 60, 72 and 84 months, then you can get the totally
6 months, yes, obviously 6 months free CBSE subscription. So likewise, if you are having the Plus and Iconic subscription for 12, 15 and 18 months, you can get the free Creative Corner subscription for 2 months. And same in the case for the 24, 36 and 41, 44 months, 48 months का आपको अगर सब्सक्रिप्शन रहेगा प्लस और आइकॉनिक का, then you can get the 4 month subscription for Creative Corner, that is totally free. And the next one, that if you are having 60, 72 and 84 months plus an iconic subscription, then you can get the free Creative Corner subscription for 6 months. So you will be having the flat 10% discount on purchasing plus subscription on for all the duration, and it is valid for the first 500 subscriptions only. So choice is here. With an Unacademy subscription, you can get the many benefits like unlimited access to 7 subjects and India's top educators to choose from. Obviously, you can get the full syllabus, that is NCERT dedicated plus courses. So subscribe now before it's too late, students. The next exams are just for the 2 months, and you can get the 10% discount using educator referral code. So you can use my code, that is TDLive, for 10% discount on plus subscription for all the durations. So we are having the mega launch on every Monday. So likewise for class 9, you are having the term 1 victory batch, which includes math, science, English, Sanskrit and SST, that is social sciences. So इसकी start date जो है, it is going to start on the 16th of August 2021. So वैसे class 9 के लिए term 1 victory batches जो है maths, science, English, Sanskrit and SST, these are going to start on the 16th of August 2021. So we are having the mega launch every Monday. हर Monday को ये जो हमारा होता है mega launch होता है. And obviously for class 10th, CBSE class 10th, you are going to have term 1 victory batch for math, science, English, Hindi and SSC. And its starting date is 16th of August 2021. Now for CBSE class 10th, we are having term 1 victory batch for maths, science, English, Hindi and SST, that is social sciences, and it is also going to start with the date, that is 16th of August 2022. So these are nothing but the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. So we are having the topmost educators from India. So jaldi कीजिए, you can use my code, that is TDLive, for flat 10% discount. So friends, let me tell you about the basic about the plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started, and yes, obviously at iconic you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए plus के features क्या क्या है. You are having the India's best educators as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. And in iconic में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs also. So यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. You are having the live doubt solutions, live interaction with your mentors also, and yes obviously parent connect भी यहाँ पर रहेगा, that is teacher parent connection रहेगा यहाँ पर. and आपको iconic का special study panel जो है वो भी मिलेगा. So you can use my code, that is TDLive, for flat 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solutions. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके प्लान्स कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10th का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month subscription, then you have to pay 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription, then you are have to pay 10,000
for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12-month subscription, then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15-month subscription, then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months, then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24-month subscription, then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months, then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा, एंड 830 विल बी फॉर पर मंथ. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो बेसिक क्लास का 9, 10, 11, 12 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए. द सेम केस फॉर 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 एंड 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा विथ 4,000 पर मंथ. देन नेक्स्ट वन इज 6 months, 17,000 रहेगा विथ 2,833 पर मंथ. देन 12 months का रहेगा 28,000. देन 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 एंड 48 months का रहेगा 83,000, that is 1,729 per month. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 month का रहेगा 3,000 के लिए. 12 months का रहेगा 15,000 के लिए. 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. then 6 months का 17,000. 12 months का 28,000. 15 months का 32,000, that is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे क्या रहेगा 36 months का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, that is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TDLive, for flat 10% off discount. So student, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन that is based on your choice, that is plus और iconic, प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. चलिए फिर से एक बार अनअकैडमी का कमबैक जो है वो आ रहा है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैक. सो यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore एंड इट इज ऑन एवरी संडे. सो जो उसकी जो अनअकैडमी कॉम्बैक जो लिंक है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये कैसे रहेगी, देखिए अनअकैडमी की हमारी जो है weekly scholarship test होगी. and yes, obviously you can start from enrolling for the free by using your Android phone also. अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है आप लोग वो भी यूज कर सकते हो. you can view the video solutions for these questions also. you can win the scholarships and exciting prizes. देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो एक बेनिफिट रहेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू कैन अपीयर फॉर द लाइव टेस्ट एंड दैट विल बी टोटली फ्री. सो इससे क्या होती है आपकी वीकली प्रैक्टिस भी हो जाती है, सिलेबस भी आपका जो है वो कवर हो जाता है. यस ऑब्वियसली इफ यू विन यू आर गोइंग टू हैव द स्कॉलरशिप. ठीक है, इससे भी पहले हमारे बहुत सारे कॉम्बैक जो हुए हैं. सो यू कैन पार्टिसिपेट फॉर फ्री. सो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैक स्कॉलरशिप टेस्ट. इट इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड क्लास 10th. सो आने वाला जो कॉम्बैक है दैट इज ऑन द 22nd of August 2021 at 11 AM. सुबह 11 बजे जो है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा. यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore
सो इसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चंस. These questions रहेंगे and you are going to have 45 minutes to solve these 30 questions. And yes, obviously dates will be there in both English as well as in Hindi language. So you can choose as per your own choice. And the exam, that is the scholarship test, will be free live, which will be available on Android mobiles. So students, jaldi kijiye, enroll now. The link is given in the description box below. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TD Live, for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code, that is TD Live. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.